Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 10th of February. So first of all, we are seeing Aerospace India 2025 Expo that will be basically for the promoting the presence of India globally. क्यों जरूरी होता है? ताकि एक प्लेटफॉर्म इंडिया को भी मिले टू शोकेस इट्स एडवांसमेंट इन इनोवेशन इन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एरोस्पेस एंड द डिफेंस सेक्टर. सो बेसिकली इसका एम होता है टू स्ट्रेंथन the position of India in aerospace and defense manufacturing, and it also attracts both domestic and foreign players to the different sectors. इंडिया का जर्नी रहा है, ट्रांजिशन रहा है फ्रॉम बीइंग अ डिफेंस इंपोर्टर टू अ सेल्फ रिलायंट प्रोड्यूसर, एंड देन इट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग द डिफेंस प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज. सो फॉरेन पार्टिसिपेशन भी हमने देखा. फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया, जहाँ से पार्टिसिपेशन था. एंड पीएसयूज का भी हमने पार्टिसिपेशन देखा इन प्राइवेट फर्म्स भी, जैसे कि एचएएल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, that becomes important. BEL, BEL, that is Bharat Electronics Limited, that is also important. तो हाइलाइट्स क्या क्या रही पूरे ही एक्सपो की? सबसे पहले लेटेस्ट एयरक्राफ्ट शोकेस किए गए, दैट जैसे कि सुखोई 7057, देन राफेल, तेजस MK2, इनको एग्जिबिट किया गया. डिफेंस स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की तरह ये वर्क करता है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप्स, डील्स विद द फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज. सो बेसिकली एक वन स्टॉप सोल्यूशन एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह भी ये काम करता है, एंड इंडिया को भी हेल्प करता है इन अचीविंग मोर सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग an opportunity to attract more foreign direct investment in this sector. So that is why Aero India Expos, that also becomes important, and it highlights India's intent to emerge as a global leader. Then AI Summit that will be held in France. So Prime Minister Narendra Modi, he was also invited and he will be co-chairing the summit. And India is also having a unique opportunity and a position for itself as placing itself as a leader, a responsible leader in the AI innovation and governance. So there are multiple sectors that will be impacted. For example, healthcare, finance, agriculture, tech industry, then also defense sector. So AI for global south की बात की गई. India can also take lead in developing AI solutions which are tailored basically for the emerging economies. Then regulatory framework, जैसे India must also develop AI regulations जो कि safety, ethical use, data privacy को ensure करते हैं. तो misuse and surveillance को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए प्राइवेट एंड पब्लिक कोलैबोरेशन, एआई स्टार्टअप्स आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सिटी रिसर्च को जोड़ना विद एआई स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड जो करिकुलम है, क्या हम उसको जोड़ सकते हैं करिकुलम में? एआई के इंटीग्रेशन की भी हमने बात की थी. एआई इन गवर्नेंस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. जो पब्लिक सर्विसेज हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन है, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग है, दैट कैन आल्सो इनहांस द गवर्नेंस एफिशिएंसी. सो एआई जो है वो एक सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एसेट है. So countries that are leading in AI, they will also be dominating in economic growth, cyber security, then also innovation perspective. So for global south, we can say that India is the one which can take the lead, and India also advantages with the talent pool in the IT sector that it has, the demographic dividend, and we can basically upskill and reskill our youth and the workforce so that AI infrastructure can be invested in, computing power, regulatory standards, they can be also maintained to simplify the process. So that is why the AI capabilities hain, it becomes important for India to build the global partnerships. And this AI Action Summit in France is also giving India such an opportunity. And it will be interacting investments also in the AI driven industries. So different AI models, and we are also working on
basically indigenous AI model for India. Then why is South Africa's new land law that Trump finds immoral? So South Africa's new land expropriation law जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू टेक लैंड विदाउट कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ओनली. सो ये जो लॉ है इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑफ अपार्थाइड वेयर अ स्मॉल वाइट माइनॉरिटी दे कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द लैंड. एंड बेसिकली जो यूएस president here Donald Trump, he also criticized this law and he called it immoral because he argued that it is violating the property rights. So South African authorities, they also justified the law that stating that it is necessary basically for land distribution for the marginalized communities who are deprived of land ownership due to apartheid policies. So expropriation without compensation is a key aspect, and then also the historical context that the black South Africans, they were forcibly removed from their lands, and it left a deep economic divide in the society. So critiques are also saying that international investors worry that this could hurt the foreign investment and the stability from economic perspective, but many also support and argues that this will be correcting the past injustice and is basically necessary for economic justice also. So land reforms in South Africa, that has been a contentious issue from since the end of apartheid in 1994. So many black South Africans, they still lack access to the land ownership and they are basically leading to economic disparity also. So land rights, global debate, then also social justice, economic justice and economic inequality को ये highlight करता है. साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल भी हमें ये दिखाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वहां पे जो स्टेट पावर है दैट रेगुलेट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल यूएस, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के अंदर. तो जो गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, इट कैन सीज द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज बट इट मस्ट प्रोवाइड जस्ट कंपनसेशन. इंडिया के अंदर भी जो लैंड एक्विजिशन लॉज हैं बिफोर 2013, द लैंड एक्विजिशन इन इंडिया, इट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग अ फेयर कंपनसेशन एंड फियर ऑफ फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. बट 2013 के अंदर भी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट को लाया गया. एंड साथ ही साथ जुडिशरी का भी रोल रहता है इंडिया के अंदर, जो कि इंटरवीन करता है एंड मेक श्योर करता है कि जस्ट कंपनसेशन दिया जाए एंड बेटर रिहेबिलिटेशन दिया जाए. बट डिस्प्यूट होता है अबाउट पब्लिक पर्पस, दैट व्हाट इज पब्लिक पर्पस एंड विच पब्लिक पर्पस इज इम्पोर्टेंट, कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको एक्वायर कर सकते हैं. साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक डिले जो है वो एक चैलेंज बन जाता है. साउथ अफ्रीका मॉडल की भी जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने वहां पे पावर दिया है, जो कि हमने अभी देखा, टू एक्वायर द लैंड विदाउट इवन कंपनसेशन इन सम केसेस, जो कि इंडिया एंड यूएस से काफी ज्यादा डिफरेंट है. तो कहीं ना कहीं हम इंडियन यूएस के केस में देखते हैं कि एक बैलेंस हमें देखने को मिलता है बिटवीन द प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स एंड देन ऑल्सो द स्टेट इंटरवेंशन, जो कि इकोनॉमिक एंड लीगल दोनों ही इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड आर्टिकल 31 जो कि इसको गवर्न करता है इन इंडिया. सो कैसे डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हैंडल करते हैं कन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म को, प्राइवेट ओनरशिप को एंड देन ऑल्सो पब्लिक इंटरेस्ट को. Then keep a watch on the growing arc of violence. So violence across the world is what we are talking about. Instability is sometimes created due to this violence. पर्टिकुलरली बात करें हम मिडिल ईस्ट के बारे में, अफ्रीका के बारे में एंड देन ऑल्सो यूरोप के बारे में. prolonged wars in Ukraine and then in the Middle East, they have intensified civil casualties and then also geopolitical instability. So radicalization, extremist ideologies, they continue to pose a major threat. Terrorist groups and they are finding new ways to recruit and attack. They are also using technology now, and the attacks can easily be conducted in cross border terms also. So underground militant activities are also there. Subterranean warfare
is also on the rise, which is making it difficult for the governments also to control such kind of threats. Weakening of groups like Al Qaeda, ISIS. It has also led to the emergence of new terrorist networks, which are decentralized also. So, resurgence of Islamic terrorism networks in Africa and Asia is particularly concerning in this article, as showcased. So, the attacks on the transport infrastructure, for example, railways, it have been increasing in some countries, which is raising concerns regarding security. So, new factions are basically emerging, and they are also using online radicalization techniques. So it is not only important for national security, but it is also important for geopolitical and basically political stability. And it will also be impacting the international relations with several countries. So the spread of violence, the armed conflicts, it is expanding in the unforeseen areas. And with increased attacks on the public spaces in the transport hub, we can see that how important it is and how the warfare is basically transitioning and shifting towards a modern warfare, जहाँ पे एक नॉन स्टेट एक्टर जो है अंडरग्राउंड मूवमेंट है, it plays a significant role in the security aspect. So this growing arc of violence, it is basically having a serious implication on the global stability, and it is not just in the terms of military conflicts, but it will also be impacting public safety and the economic and political perspective. So India is a strong advocate for counter-terrorism efforts, and it condemns terrorism on a global level. What does budget offers the railways? सो रेलवे को कितना एलोकेशन हमने देखा, 2.62 लाख करोड़ रुपीस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश इट हैज बीन अनाउंस्ड, बट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि रेलवेज का जो ऑपरेशन है इट कंटिन्यूज टू फेस हाई कॉस्ट. डिस्पाइट लार्ज इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो पैसेंजर कन्वीनियंस है इट हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड. So there is also emphasis on electrification, on upgrades regarding the safety of the passengers, then also the capacity expansion. But क्यों प्रोग्रेस स्लो है, जैसा कि क्रिटिक भी किया जा रहा है. तो इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ओवर 90% ऑफ द रेलवे लाइन्स दे आर नाउ इलेक्ट्रिफाइड, विच विल बी रिड्यूसिंग अ डिपेंडेंसी ऑन द डीजल. ये की फैक्ट है. इसके अलावा 3000 Vande Bharat trains will also be new Vande Bharat trains will also be introduced over the next few years. Freight corridors का हम expansion कर रहे हैं, dedicated route बना रहे हैं for the freight movement. That will also be reducing the congestion on the passenger lines. तो जो delay भी होता है कई बार railways के अंदर, that will also be eased for the passengers. Then also जो railway revenue है वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहता है, जिसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग, एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द फ्राइट ट्रांसपोर्ट इट इज बेसिकली लोअर व्हाट इज एज कंपेयर टू व्हाट इज एंटिसिपेटेड. सो जो रेलवे बजट है इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर logistics, for connectivity, and for India's economic growth also. And with electrification and more safety upgrades, we will be basically putting forward a sustainable model for the railways. But उसके बाद भी concerns हैं regarding if the sector is keeping the pace with the demand, and if the government's investment strategy, they are focusing on the long term benefits also. So immediate impact on the passengers, they remain limited till now. So that is a major concern, and then also revenue is a major concern. Then regarding budget only, we are seeing different tax benefits, incentives for the middle class taxpayers, for businesses, then for also investors. For example, there is no tax for the incomes up to rupees 12 lakh per year. TDS is there, tax deducted at source.
There are reforms, higher limits for the senior citizen, interest exemptions are there, reduction tax collection on the remittances is there. Then complication, जो कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस प्रोसीजर्स थे उनका सिंप्लीफिकेशन भी किया गया है, तो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है. देन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को हम प्रमोट करें, दैट विल बी इंकरेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आल्सो थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स. देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स व्हाट इज आल्सो व्हाट वी आर सपोर्टिंग. Then can we say that the budget, it takes a pro business approach and it is focusing on basically economic expansion while also easing the tax burden on the middle class families. So but the question remains on whether these policies will be effectively boosting the domestic demand and then also the job growth that is also sustainable. That becomes important. तो ये एक analysis and quick snippet भी हम देख सकते हैं regarding the focus, how the budget is focusing on basically growth and compliance simplification for the middle class and then for also easing the procedure for the businesses. Then Sam Nujoma, who is Namibia's fierce freedom fighter and the first president. He dies at 95. So he was the first president of Namibia and the key figure in the country's liberation struggle. Significant role उनका रहा है against the fight against South African colonial rule and ultimately securing the country's independence in 1990. So Nujoma was also the founding leader of SWAPO, that is Southwest Africa People's Organization, which led the armed struggle for the freedom. So he served as the Namibia's president also for 3 consecutive terms, and his role was instrumental in the nation building. Women right को advocate किया उन्होंने, Pan African unity को भी champion किया. He also advocated for the upliftment of the marginalized communities. So anti-colonial struggle में उनका रोल रहा है nation building के अंदर. Then Pan African unity for women's rights also he becomes important. और भी लीडर्स रहे हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला, जूलियस नायरेरी, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है ब्रॉडर अफ्रीकन स्ट्रगल के अंदर अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म आल्सो. तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, गवर्नेंस स्टाइल है, इट इज बेसिकली सेलिब्रेटेड एंड कहीं ना कहीं ये भी शोकेस करता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडरशिप जो था इन द अफ्रीका, इट वाज फेस्ड बाय वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज आल्सो, यूनिटी को लेके, देन राइट्स को लेके एंड नेशन बिल्डिंग, जिसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग, इकोनॉमिक एस्पेक्ट. सो वो कहीं ना कहीं एक यूनिक चैलेंज था खुद में. Then bifurcating one of the highest revenue generating zones of the railway, and what will be changing. So bifurcation of the South Coast Railway Zone, which is India's highest revenue generating division. Aim is to improve the operational efficiency, reducing congestion, then also increasing the revenue generation. Headquarters is in Visakhapatnam, and it has been divided to enhance the regional connectivity and then also the effectiveness from administrative purpose. So efficiency increase करने के लिए, better management of the freight and the basically passenger services. जो potential disruption है, that could affect the railway workers and the logistics initially, but revenue redistribution also becomes important. So basically हम बोल सकते हैं it is a push by the government also to modernize the railways and to decentralize the management. They can have short-term disruptions, but such bifurcations, they will be impacting the employment and freight distribution in a longer term. Basically, we are restructuring the policies also that will be ensuring seamless operations. Then in the budget only, there is one more theme which we are focusing upon, that is urban development.
which becomes important as we are also advocating for Swachh Bharat missions for developing smart cities, clean cities, and sustainable cities. And the infrastructure and housing becomes important. Various metro projects, smart city initiatives, they are important, and the funding for them is also important. So the funds for the urban local bodies, the municipalities, it remains limited, which is a challenge which is arising, and it is raising concerns also about the ability of the municipalities to handle the urban challenges. And the budget also focuses on affordable housing schemes and also improving the public transport. So more investments are needed in the sewage, water management, and sustainable urban expansions also. So urbanization is one of the India's main priority, and it also remains one of the India's biggest challenges. So the budget allocation, it also plays a crucial role in prioritizing these sectors. For example, the focus on metro, the smart city, it is positive, but challenges भी हैं जैसे कि बेसिक कम्युनिटीज वाटर क्लीन वाटर को लेके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेके, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट हम कर पाए, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग increasing the transparency in the governance. Then can we also promote public and private partnership different sectors के अंदर. Then Aero India Expo 2025 we talked about कि क्यों ये important रहता है. कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हम देख सकते हैं. इंडो पैसिफिक पिवट एंड इंडियाज एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड कैसे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है. एरोस्पेस एज अ स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट, we are strengthening the partnership with Indo-Pacific nations. Maritime security is one of the priority of India. Quad-led initiatives भी हम strengthen कर रहे हैं with India, India with US, Japan and Australia also. There is expansion of India's indigenous defense capabilities also. For example, Tejas Mk2, then LCA Navy, then also AMCA, that is Advanced Medium Combat Aircraft. So that becomes important. So it acts as a strategic counterweight to the China also. So India needs to bolster the airspace capabilities to balance the growing influence of China also in the region. And Quad-led defense cooperation also becomes important, coupled with the indigenous advancements that we are seeing in the defense sector. Then women in aerospace are also breaking barriers, and they are also reaching new heights. The number of women in airspace research, training, then defense innovation, it is increasing. Several female officers are also now flying combat aircraft such as MiG-21 and also Tejas. So women are also making strides in the defense startups also, जैसे कि IDEX या फिर स्प्रिंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे मिलिट्री इनोवेशन के ऊपर भी women जो है वो contribute कर रही हैं. So leadership roles of the women, it is also increasing. Startup which are driven by defense projects, AI, robotics, then also airspace tech. वहाँ पे भी जो women हैं, they are starting to lead. Then there are also policies by the government जिसमें हम women participation को increase करते हैं and diversity को basically promote करते हैं. Then we can see emerging defense startups, how it is reshaping the India's military टेक्नोलॉजी लैंडस्केप ऑल्सो. सो गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है जैसे कि आईडेक्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस एंड स्प्रिंट, उनके लिए फंडिंग न्यू डिफेंस सोल्यूशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल गाइडेंस टेक है. सो जैसे कि एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर सुपीरियर एयर डोमिनेंस, MBDA Meteor. देन आर्टिमॉन एयरस्पेस जो कि फोकस करता है एयर AI ड्रिवन सोल्यूशन फॉर द मैरीटाइम डिफेंस के ऊपर. सो ये डिफरेंट हम इनोवेशन देख सकते हैं. सर्विलेंस, देन
मैरिटाइम सॉल्यूशंस के लिए। सो जो स्टार्टअप्स है दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक ड्राइविंग फोर्स है फॉर इनोवेशन इन द नॉट ओनली इन द डिफेंस सेक्टर बट इन वेरियस सेक्टर्स। तो जो डिपेंडेंसी है ऑन द ट्रेडिशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वो भी वो रिड्यूस करता है। Then Aero India 2025 and every year that it is held, it becomes a strategic platform for India to push the defense modernization efforts and to also provide a platform for the private and the public sector to re-engage and position themselves in helping India also to become a global leader in the military technology and in the airspace, in the maritime sector. सो इंडिजिनियस R&D के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशंस के साथ, EU के साथ, एंड देन ऑल्सो डिफरेंट डिफेंस स्टार्टअप्स आर ऑल्सो देयर। सो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वाड के साथ कोलैबोरेशन। सो इट इज बेसिकली अलाइनिंग इंडियाज गोल ऑफ इमर्जिंग एज अ मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर एंड मिलिट्री पावर, एंड ओवरऑल ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये भी उसी गोल के साथ अलाइन करता है। फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन भी हम लेके आ रहे हैं। इंडिजिनस डिफेंस, अनमैन्ड unmanned air vehicles हम लेके आ रहे हैं, missile systems are there, fighter jets are there, then also military technology is there. We are promoting the participation of startups along with MSME sector also. So IDEX plays a very important role in the innovation aspect. Then also public and private partnership with various companies, for example, General Auto or Atomics, MBDA, then Rolls Royce also. So they are basically helping India to drive growth. And India as a defense manufacturing powerhouse, it becomes important for India also to become self-reliant in defense production. There is rise of MSME sector also. Then India is enhancing its satellite-based communication system also. So there is surveillance and defense system. So India space policy 2023 it becomes important, क्योंकि वहां पे हम prioritize कर रहे हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स को, स्पेस बेस्ड सेंसर्स को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को। तो हम एक मिलिट्री ग्रेडेड स्पेस एसेट को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। And India also aims to compete with different global space powers like US, China, and India is basically working towards creating its own space, its own position in the global space powers. So China's space expansion is also there. China is also expanding its satellite network. It is also pushing India to enhance its own capabilities. So space in warfare, it also becomes a key aspect in the modern world, where satellite intelligence, GPS navigation, then also missile guidance systems, they become very important tool for national security. So that is why indigenous space development is also important, because it is somewhat directly linked to the modern warfare and it is directly linked to the internal security. Then how we are achieving true defense indigenization? And it requires IP, that is intellectual property, in the defense technologies also. So India still depends on some foreign companies for critical defense technology, जैसे कि जेट इंजन या फिर मिसाइल सिस्टम्स, एवियोनिक्स की अगर हम बात करें तो। सो कोलैबोरेशन जो होता है विद द डिफरेंट फॉरेन कंपनीज, इट शुड आल्सो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर and in-house manufacturing in India also. So rather than just procuring, we should also focus on these two aspects. So we are moving towards localized manufacturing. For that, indigenous IP also becomes important for long-term self-reliance. Collaboration is important, but indigenization of the IP is also important. For that, technology transfer and in-house manufacturing becomes the key aspect. Then SMPP,
Limited. It is a Indian defense company which is basically specializing in ballistic protection, bulletproof jacket, ballistic material. So it is also expanding internationally. It is also exporting now to Germany, to USA, and to different European defense markets. So indigenization of defense manufacturing में ये भी एक की लीडर हैं, एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी एक की एस्पेक्ट हो जाता है, जिसमें इनोवेशन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो क्लोथिंग है उसको और लाइटर हम बना रहे हैं और इफेक्टिव बना रहे हैं फॉर द ballistic material. Hindustan Shipyard Limited है. It is basically powering India's maritime ambitions and the vision India is having. So it is basically focusing on modernization, the expansion of the infrastructure, and the collaboration in the navy aspect. So expand भी करें infrastructure को, हम naval strength को basically boost भी कर रहे हैं. Then also government is also backing the initiative with strong policy supports, and domestic shipbuilding की जो growth है उसको भी government drive कर रही है. Then India and Germany ties becomes important in defense collaboration. 2024 में भी इंडिया जर्मनी डायलॉग जो था वहां पे हमने देखा, it also set the stage for deeper cooperation between the two nations. Then also in aerospace technology, we are promoting transfer of technology in naval systems, in also radar solutions we are tapping. So Germany is very important and it is increasing its defense presence in the Indo-Pacific region. It is also aligning with India's vision for a regional security aspect and also technological partnership. So joint aerospace manufacturing, it becomes important for Atmanirbhar initiative. And जो collaboration है different aspects में, जैसे cyber and electronics warfare solution, technology transfer, joint manufacturing, supporting Make in India, then airborne and radar technologies, which will be strengthening the aerospace defense awareness also. So these are various different aspects जहाँ पे हम focus कर रहे हैं, and collaboration, joint collaboration को basically बढ़ा भी रहे हैं. साथ ही साथ joint research के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं regarding submarine warfare. Then green propulsion system, that also becomes important because India is also pushing towards eco-friendly propulsion technology in the space exploration. तो जो traditional propulsion system होते हैं, they rely on highly toxic chemicals जो कि human safety के लिए and environmental sustainability के लिए long term में एक risk pose करते हैं. So green propulsion systems such as electrical propulsion, then also biofuel based systems, they become important, and basically they can be developed and they will be offering a safer and more effective alternative. So Bellatrix Aerospace, it is also leading, it is leading in Indian space, it is a leading Indian space startup in the aspect of next generation green propulsion systems. उनकी रुद्रा सीरीज भी है जो कि एक इनोवेटिव प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एंड रेवोल्यूशनाइज रीयूजिंग इंजन, उसकी हम बेसिकली बात करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं. तो ये कोलैबोरेशन भी दिखाता है इन दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर इनोवेशन. देन साथ ही साथ हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन वॉरफेयर है वो भी इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम मिलिट्री एप्लीकेशंस to geopolitical, acting as a geopolitical tool. So drones, they have been transforming the modern warfare. They are now used for intelligence gathering, for precision strikes, for also strategic deterrence. Post 9/11 conflict also led to the rise of drone warfare, particularly by the USA in Iraq, Syria, Pakistan, Afghanistan. Israel and Iran are also heavily using drones, as we saw in the recent conflicts, for border security, for asymmetry warfare, then for also aerial surveillance. So India is developing its own drone ecosystem and drone technologies, जो कि civilian needs को भी बल्कि defense needs को भी cater करेगा. So drone का जो role है वो increase होते जा रहा है. That is why drone diplomacy also becomes important.
सो इंडिया के अंदर भी इंडिजिनस यूएवीज के हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एंड एक्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि नेत्रा, रुस्तम, आर्चर। सो एक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है ऑफ 5,000 crore rupees by 2026. So drone technology becomes important and India's self-reliance on the UAV also becomes important. Then Agri Infra Fund, they will be getting a support of 58,000 crore rupees that will be focusing on boosting two aspects. सबसे पहले तो farm infrastructure, then also post harvest facilities. It will also be resulting in increased incomes of the farmers by investing in warehousing, cold storage, and logistic aspects, and it will also be increasing the efficiency of food, maintaining food security. And जो losses हैं, ripening chambers हैं, उनके द्वारा warehouses के द्वारा हम reduce कर पाएंगे. तो wastage of perishable goods, it will be basically prevented, and it will also be providing financial support to the farmers. जहाँ पे उनको लोन स्कीम्स जो हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगी, एंड इट विल आल्सो बी हेल्पिंग स्मॉल फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. So it is a major step towards modernizing the Indian agricultural sector, towards reducing wastage of the perishable goods, and then also improving the supply chain. It will be in result boosting the rural income also. So PM Kusum and different फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स, उन सब का ही हम कन्वर्जेंस यहाँ पे देख सकते हैं. दैट विल बी इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ. Then customs reforms to avoid the tax disputes like Volkswagen. So Finance Bill 2025, it is introduced customs reforms to prevent tax disputes different cases के अंदर. जैसे कि वॉल्क्सवैगन के केस में भी देखा, द कंपनी फेसेस 1.4 बिलियन टैक्स डिमांड. सो द रिफॉर्म इट मैंडेट्स डिफरेंट प्रोविजनल टैक्स असेसमेंट्स, जहां पे टैक्स असेसमेंट्स दे मस्ट बी फाइनलाइज विद इन 2 years ओनली. जब पहले एक्ट की बात करते हैं, Customs Act 1962, it basically lacked a clear timeline and it caused delays, uncertainty in trade-related taxations. So, Volkswagen India, it also allegedly misclassified the imports ताकि lower custom duties उनको pay करना पड़े, which is leading to a legal dispute now. And हम देख सकते हैं कि कैसे 2025 एक्ट के साथ हम फास्टर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेके आ पा रहे हैं फॉर द टैक्स डिस्प्यूट्स, क्विकर टैक्स असेसमेंट हम कर पा रहे हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग द लॉन्ग लीगल बैटल्स. So greater clarity for the businesses also becomes important, and automobile sector के ऊपर भी impact इसका कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि it will be impacting the imported cars components that are classified and that will be taxed. Then government looking at the procedural easing to promote the FDI. So we are basically simplifying the procedure to attract more foreign direct investment. DPIIT का important role रहता है, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, for conducting the consultations with the stakeholders. Then it also includes different equity firms, industry associations, law firms. So key proposals, it is including 3 major things जिसमें important aspect आ जाता है. सबसे पहले तो allowing e-commerce players that will be receiving FDI for inventory based exports. Then also easing regulatory hurdles for creating a single brand retail trading. Then also clarifying the ownership rules ताकि foreign investment का जो process है उसको ease किया जा सके. तो single brand retail growth, e-commerce expansion, that will be allowing FDI in online retail exports also. And we are basically promoting FDI friendly reforms जिससे हम
इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर पाएंगे एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग द प्रोसेस मोर सिंपल. Thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us.